Hello there, I'm Dr. Purva and you will be exploring Ooty with me. So, Ooty is known as the hill station, queen of hill station and is situated in Tamil Nadu. The best season to visit there is from April to June and September to November. You can go there by the means of train that is from Mysore, otherwise airport say you can take flight from Chennai, Coimbatore and Bangalore, but to reach proper Ooty you will either have to take a cab or a bus. 2 days are more than enough for a complete tour at Ooty. Also what we did is we hired a bike for a Ooty tour because it is like we are quite independent. हमें जहाँ जितनी देर रुकना है रुक सकते हैं. We wanna skip, we can skip. Also the tours and travels from where we have hired bike, we'll mention that in the description below. So first day of Ooty we stayed at Club Mahindra. In its beautiful resort, we did in-house activities. There was Halloween DJ night and yummiest breakfast. I love their breakfast. Obviously lunch and dinner was also good, but I love their breakfast. And in case you are looking for proper Ooty tour, you can skip it and move to our day 2, where we are visiting all the different food joints as #Mitwa is all about we are foodie. List of places we have covered are all been there at the end of the video. We are listing it all, so do watch it till the end. So this is AA Tours and Travels, walking distance from bus stand, from where we took two-wheeler on a rent which was DO, and it charges around 800 for some 12 hours, but we took it for 24 hours. Enjoying the 2 a.m. coffee by Sumit. So we had planned 2 days of Ooty trip, but यहाँ आके हम लोग को पता चल रहा है कि लॉकडाउन है. As you can see, masks on our face. तो इसलिए we'll just see कि हम लोग हाफ डे में कितना ऊटी कवर कर पाते हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्चुअली जो अंदर लाइक बोटानिकल गार्डन ये क्लोज है, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन कवर. See guys, the first thing we have came at bus stop. Bus stop around हमें just 200 मीटर पे एक two-wheeler हायर रेंटिंग वाले मिल गए. So you can go there, you can rent there. I will मैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टू-व्हीलर की, और उसी के आगे जस्ट 300 मीटर पे पेट्रोल पंप है जहाँ पे आप रिफिल कर सकते हैं. Once you refill, we can go with the tour. हम ट्राई करेंगे कोविड का मतलब बंद होने के टाइम में भी मैक्सिमम चीज़ें कितनी आप देख सकते हो बाहर से कवर कर सकते हो वो सारी हम कवर करने का भी ट्राई करेंगे. ओके, सो लेट्स टेक यू टू द फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. So here we are moving towards Ooty Lake. Oops, boat house is absolutely closed. We have arrived here at Avalanche Lake, which is actually behind these beautiful trees, and it absolutely looks like sky. रास्ते में हमें एक ब्यूटीफुल पाइन फॉरेस्ट मिल रहा है. So dense and so beautiful. Also there is cycling available when mostly this all everything will get open, so you can get a cycle on rent and you can like just drive around here. So as we saw, Ooty Lake closed है due to this COVID times, but otherwise बहुत beautiful place है, worth visiting. So now we are moving towards Kalhati waterfall, which is 8 kilometers from Ooty Lake and 12 kilometers from bus stand. So around 4 kilometers from the Ooty Lake, we have encountered a golf course on the way to Kalhati waterfalls, which gives a really beautiful view as
Also, there is forest surrounded by this golf course. Okay, Sumit, let's go and search for entry. Yep. So golf course भी बंद ही है, तो फिर अब कालहाटी वाटरफॉल ही चलते हैं. Come on, Sumit, straight ही है. पीछे वेट कर, सब स्टेज ही लगता है. So this is कालहाटी waterfall view point. But as you can see, यहाँ से waterfall का कोई व्यू नहीं है. So यहाँ से straight 2 kilometers will go, and there we can see कालहाटी waterfall. And please be safe here because यहाँ पे बहुत सारे hairpin bends हैं. सो अराउंड 6 किलोमीटर्स वाटरफॉल पॉइंट से आगे ड्राइव करके हम आगे आए. सारे कर्व्स बड़े ही शार्प है. थोड़ी सी कॉशियस ड्राइविंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी. उसके बावजूद अभी कोविड में और एनीवेज ये वाटरफॉल के अंदर तो आपको जाने नहीं देते. आपको वाटरफॉल सिर्फ देखने मिलेगा. एंड द बेस्ट थिंग और द बेस्ट शॉट वी कैन टेक फ्रॉम हियर ऑफ द वाटरफॉल इज फ्रॉम हियर इटसेल्फ. सो आई डोंट फाइंड इट वर्थ, क्योंकि आपको पूरा एक साइड आगे आना पड़ता है जो पाइसारा लेक से कंप्लीट अपोजिट साइड में है. यू कैन टेक द शॉट ऑफ द वाटरफॉल्स एंड यू कैन सी दिस. This is it. So जितना डिफिकल्ट था नीचे कालहाटी वाटरफॉल पॉइंट पे जाना, उससे डबल डिफिकल्ट है वापस ऊपर जाना बिकॉज ऑफ शार्प कर्व्स. We'll recommend you to take bike rather than moped because that will help you overcome these sharp curves. And yes, बंदरों से बच के रहना, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर. Yes. एंड यहाँ का क्लाइमेट, आई एम इन लव विद दिस क्लाइमेट. मस्त कूल और काम है, और वेरी वेरी लो रेनफॉल जो बीच में आती है एंड देन इट स्टॉप्स. ठंडी तो आप देख सकते हो, उसका नाक पूरा लाल हो चुका है. यस, एक्चुअली रेड हो गया है. So लेट्स गो. right now we are going to the Paisara Lake. Before that there is a point जहाँ पे बहुत सारी shootings होती है. So we'll try to cover that point and then we'll go to the Paisara Lake जहाँ पे boatings भी generally होती है. Yes. So let's go. So these are नीलगिरी hills. यहाँ पे टी प्लांटेशन होता है एंड यहाँ पे आसपास बहुत सारी शॉप्स भी हैं जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की टीज लाइक ग्रीन टी, इवन चॉकलेट टी तक मिल जाएगा. एंड दोज आर ऑल फ्रेशली पिक्ड अप. So here we are enjoying खाकरा. Just a break, 5 minutes. 5 minutes ज़्यादा हो गया ना? हाँ लगभग. From here we are going to first, जैसे मैंने बोला, वो जो एक फिल्म स्पॉट का पॉइंट है, वहाँ से पाइकरा लेक. मोस्टली होपफुली वो चालू रहे. जैसे रहेगा हम आपको इसे इन्फॉर्म करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक हियर. एक्चुअली अब 2 से 3 लेक है, अगर आप 1 या 2 भी कवर कर लो तो इट्स मोर देन इनफ. वाटरफॉल्स आई विल सजेस्ट, क्योंकि आप अंदर नहीं जा सकते हो, इट्स बेटर कि आप वाटरफॉल ना ही करो, क्योंकि दूर से फोटो लेना तो हमारे वीडियो में ऐसे गूगल पे फोटो देख लेना. ओके. इवन सामने भी लेक नजर आ रहा है. आई थिंक इट इज पाइकरा. नो, इट इज नॉट ना. आई डोंट नो कौन सा लेक है और एक लेक है. एक कोई तो नया लेक तुमने डिस्कवर कर दिया. यस. ओके, let's get again to your #मितवा लेक. let's get again to your next point. Thank you. So on the way here is the Kamaraj Dam. Beautiful. Very clean water. बहुत ज़्यादा ठंडी में ट्रैवल करके पाइकरा लेक आए थे बोट हाउस, बट इट्स क्लोज. We thought at least we would get a view of lake, लेकिन वो भी बंद है तो हम देख ही नहीं पाएंगे. So let's get back to the town. So while returning from Paikara Lake, this comes in between. That's Wenlock's Down, जो एक lush green covered mountain है. Also जो बहुत सारे movies की shooting place है. But again, this was also closed down because our honorable president was visiting the same. But yes, this is also must inclusion in your list to the places you have to visit. So here we are at Chocolate Museum.
यहाँ पे देयर आर स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल कैसे चॉकलेट बनता है. दिस इज अ चॉकलेट ग्राइंडिंग मशीन, रोस्टिंग सॉरी. And these are the lovely yum chocolate portraits. Something you want to use it back of these 10 thing. We have our own. This is cocoa drinking vessel. These are the different types of sugars: coconut sugar, cocoa sugar, palm sugar, milk powder, cocoa butter, cocoa powder, cocoa nibs, and cocoa husk. So here, along with spices, we also have few body essentials. This cocoa butter, jojoba, lavender. These are the body creams, as well as we have lip balms. This is made from pure cocoa. I'm shortly gonna buy one. So here, this is a chocolate factory outlet, and from here we have bought these packs of Nilgiri's super tea. It has 5 different teas, I guess ginger, masala, chocolate and more too. So we are looking for botanical garden as well as rose garden, पर दोनों भी बंद थे. बंद तो ऐसे थे कि हमें गेट भी देखने ना मिले इनका, बिकॉज एज पूर्वा हैज ऑलरेडी सेड प्रेसिडेंट इज विजिटिंग हियर, तो हमें दोनों के गेट तक देखने ना मिले. आप गूगल पे देख लेना. After on the way of botanical garden, we came here across Modis Cafe, and here we are having super yum hot chocolate, must try, as well as this is obviously a pizza because we were missing it, and this is chocolate almond butter Japanese cake and a piece of dark chocolate. comparatively with the what local you'll get, जो भी local यहाँ पर है क्या chocolates के उससे यहाँ पे काफ़ी Moody's Cafe is quite expensive, but yes chocolate are definitely a must try. So yes, आपको अगर घर पे कुछ लेके जाना है then Moody's chocolate would be one of the takeaway. So come, let's join us for the hot chocolate. Yay! So a quick review. We had grilled paneer masala. It's really yum. It's kind of dabeli. Then hot chocolate, yummiest of all. मतलब जितना मैंने टेस्ट किया है सबसे बेस्ट यहाँ का था. Chocolate hazelnut. It was Japanese cake, cupcake. That was also too good. Mini pizza good. And we had a burger which was okay. But when you are in Ooty, definitely try this place. हम लोग गलती से आ गए थे, but हम लोग अभी बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे. We are just increasing orders, and also Japanese cake that we are taking for our sister and brother as well, because 8 दिन तक चल जाता है वो. So must visit. Modis. This pizza was super yum, and also this chocolate almond Japanese butter cake, that was best I ever had. And here we also have different types of chocolates. You'll get all flavors, all different type of flavors, and must say सबका टेस्ट वेरी डिफरेंट एंड वेरी यम. मतलब डिफिकल्ट हो रहा है. So goodbye to bike. So after a long day, here we are at our resort finally, Club Mahindra, Derby Green. Yeah, few more in my hands. There's actually few holes in our wallet, but yeah, those were worth it. So अभी just bus stop से ऊपर just walk किया है for 2 minutes, not even 2 minutes, and we have CSI St. Thomas Church. So while returning to bus stand, यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी smell आ रही थी. This is this shop, and यहाँ पे मेरा अपना most favorite
Maharashtrian food vada pav. With vada pav, we end our Ooty tour here. For more such videos, you can subscribe our channel and hit the bell icon so whenever we are posting a new video, you get notified. Till then, live young, live free.